Hello, welcome to this new tutorial. In this tutorial, we are going to talk about citizenship. In fact, coming next, various tutorials will deals about different aspects of citizenship, such as meaning of citizenship, legal and moral aspects of citizenship, a distinction between citizens and nationals, voters, subject, aliens, and so on. So what I'm going to do in subsequent tutorial is that I'm going to cover every aspect of citizenship in detail. So meanwhile, this tutorial is all about understanding the meaning of citizenship. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और ये एक सीरीज़ होगी ऑफ वेरियस ट्यूटोरियल्स। जैसे मैंने अभी बताया कि सिटीज़नशिप के बारे में इन डिटेल मैं बहुत वीडियोस बनाऊंगा, लगभग 10 से 12 डिफरेंट वीडियोस ऑन डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। और आज का ये ट्यूटोरियल टोटली टॉक्स अबाउट मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। सो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। वेल, द वर्ड सिटीजन लिटरली मीन्स residents of a city who enjoys certain privileges of such residence. In fact, the word is derived from the Latin word civics, and in civics the word has a wider meaning, as by a citizen we means a member of a state who enjoys all rights and privileges granted by it and also discharges his duties and obligation towards the state and other associations within it. Well, so when we talk about the meaning of citizenship, it basically says that the word citizen literally means the residents of a city. जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो उसका मतलब यही समझ में आता है कि एक सिटीजन मतलब जो इंसान उस सिटी में रहता है। और ये जो वर्ड है सिविक, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब यही है कि एक सिटीजन जो पूरे राइट्स को एंजॉय करता है, उसे प्रिविलेजेस मिलती हैं और इसके अलावा उस सिटीजन को अपनी ड्यूटीज़ निभानी पड़ती है और उसका पूरा जो ऑब्लिगेशन है वो टुवर्ड्स स्टेट है। कहने का सिंपल मतलब यही है कि एक सिटीजन वो सिटीजन है जो अपनी सिटी में रहता है, उसके कुछ कर्तव्य रहते हैं, उसके कुछ ड्यूटीज़ रहते हैं टुवर्ड्स हीज सिटी, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन, जिसका वो एक अभिन्न अंग है, जिसका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सिटी ही हैज़ सर्टन राइट्स, सर्टन प्रिविलेजेस विच आर अगेन प्रोटेक्टेड एंड गिवन टू हिम बाय द स्टेट और सोसाइटी, और इसके अलावा उसको बहुत से ड्यूटीज़ भी निभानी पड़ती है। So ये है simple meaning to understand the citizenship. So let me again repeat it. Citizens means nothing but a person who resides in a city. The word civic is derived from the Latin word, and beyond this civic it has a wide meaning, broad meaning, wherein a citizen enjoys all the rights and privileges and he also discharges certain duties and obligation towards the state and association. Well, moving on, in ancient time, the notion of citizen was very narrow and it has changed in course of time. For example, according to Aristotle, citizen is one who has the power to take part in the deliberative or judicial administrative is said to be a citizen of that particular state, and thus his idea of citizenship was purely aristocratic. In ancient time, when we talk about the citizenship, in fact the notion of citizenship is very narrow, and yes, over a period of time it has changed into a broader understanding. But for a moment, when we talk about a citizenship in ancient time, then we remember what Aristotle has said, that according to Aristotle, citizenship was given to only those people who has the power and who takes part in a deliberative or a judicial administration of the state. And thus that kind of a citizenship or that idea of a citizenship was aristocratic. जब हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं तब सिटीजनशिप का जो दायरा था वो बहुत स्मॉल था, बहुत नैरो था, और तब से आज तक यस वो दायरा सिटीजनशिप का बहुत बढ़ चुका है। लेकिन एरिस्टोटल के हिसाब से उस ज़माने में सिटीजनशिप सिर्फ उन लोगों को दी जाती थी जिनके पास पावर था, और उस पावर के
थ्रू दे वेयर यूज टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और वो पावर उनको उस ज़माने की एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेने के लिए बहुत यूज़ होता था। मतलब पीपल हु आर वेरी पावरफुल, जो लोग उस ज़माने में पावरफुल थे, वही उस सोसाइटी और स्टेट में अपना हिस्सेदारी थी, उनका एक रोल था, और वो रोल ज़्यादातर मतलब डिस्कशन में स्टेट के लिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में होता था। और इसी के वजह से वो जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप थी एंशिएंट टाइम में, उसको एरिस्टोक्रेटिक सिटीजनशिप भी कहा जाता था। मतलब जिनके पास पावर है, जिनके पास अधिकार है, वही सिटीजनशिप ले सकते हैं और बन सकते हैं। सो दैट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग सिटीजनशिप इन एंशिएंट टाइम। Let's move ahead during the feudal time. So during feudal time, citizenship was confined to the privileged few, and the ignorant many who formed the bulk of the population were excluded from it. Thus, naturally, political leadership, high officers, and high places of honor were monopolized by the privileged class. So during feudal time, the citizenship was verily confined to only those few people who are very privileged, who were privileged people. And these privileged people basically comes from a high political leadership, high officers, and from a high places of honor. And thus, the citizenship during feudal time was monopolized by this privileged class. So during feudal time, जो citizenship का दायरा था वो बहुत कन्फाइंड था, मतलब सिर्फ उन लोगों को सिटीजनशिप दी गई थी जिनको हम प्रिविलेज्ड क्लास कहते हैं। और ये जो प्रिविलेज लोग थे वो ज़्यादातर पॉलिटिकल क्लास से रिप्रेजेंट करते थे। उसके अलावा हाई ऑफिसर्स इन मिलिट्री स्पेशली और इन एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ही अधिकार था। और बाकी जो हाई प्लेसेस में रहते थे, जो ऑनरेबल लोग होते हैं, उन्हीं को सिटीजनशिप में लाया गया था या उन्हीं को सिटीजनशिप दी गई थी ड्यूरिंग फ्यूडल टाइम। और इसी की वजह से ड्यूरिंग फ्यूडल टाइम जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था, द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप वाज मोनोपोलाइज्ड, उसको टोटली डोमिनेट किया गया था बाय दिस प्रिविलेज क्लासेस ओनली। और इसी की वजह से जो ज़्यादातर लोग थे, जो बल्क ऑफ लोग थे, वो इग्नोरेंट थे, और इग्नोरेंट के कारण उनको वो प्रिविलेज हासिल नहीं हुई थी। So in short, during feudal time, the citizenship was again confined to the privileged few people in the society, and more or less, or moreover, these few privileged people would represent political leadership of the state, high officers especially in military or in administrative structure, and other high places of honor. And thus, during feudal time, the citizenship was controlled and dominated by monopolized, especially this privileged class. So this is about feudal time. Next we have is modern time. Well, in modern time it is not about direct participation in administration, but allegiance to the state in which a citizen resides and enjoy political privilege. Therefore, allegiance means the respect of the citizen for the basic idea of the state and defend it in the hours of its crisis. Thus, if a citizen is entitled to all civic and political rights, he has also certain duties to discharge towards the state. So therefore, in order to perform his or her function, a citizen must be equipped with adequate mental and moral faculties. In simple words, a citizen may be defined as one who owes allegiance to the state in which he resides. He has full share of a civil and political privileges and makes an intelligent contribution to a social richness of the state. Thus, the success of democracy depends on a good citizenship. Democracy stands for equality of human beings. The absence of such equality is opposed to the true spirit of citizenship, and therefore a totalitarian and a dictatorial state demands from its citizens unquestioning submission, suppressing thereby the freedom of thought, speech, and action of its citizens. Well, when we talk about the modern time, in modern time it is not about a direct participation in administration, but it is allegiance to the state. And when we talk about allegiance,
is basically talks about the respect for the basic idea of the state, and whenever time comes one must be ready to defend those ideas, those basic ideas, especially in the hours of crisis. और इसीलिए the success of democracy always lies on a good citizenship, and in democracy it is all about equality of human being. जब हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं सिटीजनशिप इन मॉडर्न टाइम, तो वो सिर्फ एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहता है. मोर देन दैट, इन मॉडर्न टाइम हर एक सिटीजन की एक एलिजेंस है, एलिजेंस टुवर्ड्स एक स्टेट होती है. आज की तारीख में yes, direct participation in administration is important, but more than that, your allegiance to the state is important. Allegiance माने एक loyalty towards the state, एक निष्ठा होनी चाहिए अपने देश से, अपने स्टेट से. और जब भी ये लॉयल्टी का प्रश्न आता है तो हमें ये भी समझना चाहिए कि दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट द बेसिक आइडियाज़ ऑफ द स्टेट. जैसे हमारे देश में हमारे बेसिक आइडियाज़ ऑफ द कंट्री क्या है, वही जो प्रियम्बल में लिखी है, दैट वी आर अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक सेकुलर कंट्री. सो ये हमारे आइडियाज़ हैं. इस आइडियाज़ को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए और इस आइडिया को हमेशा डिफेंड करना चाहिए. यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी एलिजेंस है, एक निष्ठा है, एक लॉयल्टी है हमारे स्टेट से. और इसीलिए जो आज हम सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी हमेशा गुड सिटीजनशिप के ऊपर होती है. एनी कंट्री और एनी स्टेट फॉर दैट मैटर कैनॉट बिकम अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी until unless people are successful, until unless citizens are good. Or how one can become a good citizen? By performing his duties, by contributing to the society. और जो गुड सिटीज़न है वो हमेशा सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है. इसी से एक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है. जैसे मान लो इलेक्शन का टाइम आएगा, ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम वी मस्ट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. Not only during election alone, but even during the past time, we must contribute in whatever way, either by complimenting to the state or even by criticizing the state. Very important. So always the success of democracy in modern times lies on the citizenship, a good citizenship, a quality citizenship. And therefore, when we talk about democracy, जब हम democracy की बात करते हैं तब हमें ये भी पता होना चाहिए कि democracy का जो मूल कोर है, जो वैल्यू है, वो है इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. जब तक ह्यूमन बीइंग हम सब लोग एक दूसरे को इक्वल नहीं मानेंगे तब तक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती. अगर उस डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर और बिटवीन वेरियस रेसेस और caste for that matter or even religion for that matter, then we are creating problem for our own democracy. And therefore democracy is all about equality of human being. और ये जो डेमोक्रेसी है और ये जो अधिकार है जो सिटीजन्स को मिलता है वो एक टोटलिटेरियन और डिक्टेटोरियल स्टेट में नहीं मिलता. वहाँ पे यू कैनॉट इवन क्रिटिसाइज द स्टेट, यू कैनॉट इवन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. इनफैक्ट इन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट में वो सिटीजन्स से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. इनफैक्ट सिटीजन्स आर बीन सप्रेस्ड इन totalitarian and dictatorial form of government. But in democracy, it is always the citizens first. It is always that equality, liberty, justice is given to those citizens. So in short, in modern time, it is not just about direct participation in administration, but loyalty towards the state, allegiance towards the state. एक निष्ठा होनी चाहिए. And therefore this allegiance is all about respect for the basic ideas of the state. And whenever time comes, defend the state, defend the country in times of crisis. And therefore, the successful democracy is the one where we have a good citizens who participates in the society, in the development of the state, who contribute back to our society's growth and development. And therefore democracy is all about equality of human being. Moving forward, in modern citizenship we have two important elements, which is liberty and membership of state. A good citizen is a free citizen and he enjoys certain rights and liberties. The right of the membership of the state includes the right to share in the government, formulate laws and pay taxes. There is no distinction between the ruler and subject. In fact, modern citizenship is broad
comprehensive, and all inclusive. It includes within its ambit not only men but also women, not only city dwellers but also villagers. It includes all those permanently resides in the country and owes permanent allegiance to the state. So when we talk about modern citizenship have these two very important characteristics. One is liberty and another one is membership of the state. And therefore, a good citizen is always a free citizen who enjoys certain rights and liberties. And thus, modern citizenship is a broad and comprehensive and all inclusive in nature. Means everybody from man to women, from city dwellers to our villagers, from different ethnic communities to religious communities, all are included who are permanently been staying or residing in the country, and therefore they owes permanently their loyalty to the state. जब हम मॉडर्न सिटीजनशिप की बात करते हैं तो मॉडर्न सिटीजनशिप के दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है या मेजर दो पिलर्स है. एक है लिबर्टी और दूसरा है मेंबरशिप ऑफ द स्टेट. ये लिबर्टी और मेंबरशिप ऑफ द स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज मॉडर्न इरा, मॉडर्न सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट. और इसीलिए इन मॉडर्न सिटीजनशिप जो एक सिटीज़न रहता है वो एक फ्री सिटीज़न रहता है. उसको कोई दबा नहीं सकता, उसकी आवाज़ को, उसके मूवमेंट को कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज ही एन्जॉयज सर्टन राइट्स एंड लिबर्टी. और इसीलिए जो मॉडर्न सिटीजनशिप का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, कॉम्प्रिहेंसिव है एंड इंक्लूसिव है. ब्रॉड इसलिए है क्योंकि वो सबको एक साथ लेके जाना चाहता है. कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए है बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट एवरीवन from cities to villages, of women to men to everybody. और inclusive इसलिए है क्योंकि it does not make distinction between which caste you belong to, which religion you belong to, which ethnicity you belong to. It is more about that you have been living permanently in that particular state or in country and you owe certain loyalty, allegiance to the state. So in short, modern citizenship is all about liberty and membership of the state, irrespective of which caste, color, creed, religion or gender you belongs to or which language you speak about. It is all about a good citizenship who is a free citizens and who enjoys certain rights and liberties, and thus it has a broad and comprehensive and inclusive nature in contemporary era. So this is all about understanding the meaning of citizenship from ancient, feudal, modern to modern citizenship. So I hope you have understood the first part of a citizenship, that is the meaning of citizenship. So see you soon in next tutorial. And in next tutorial, we shall talk about the legal and moral aspects of citizenship. Till then, take care.